लीजिए सुनिए, खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के लिए ग्लोबल सिंपोजियम और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार वितरण समारोह पर रेडियो रिपोर्ट। दिनांक 12 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक खाद्य एवं कृषि संगठन के सचिवालय द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के लिए ग्लोबल सिंपोजियम और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन नई दिल्ली के भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार में किया गया। इसका उद्घाटन भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस समारोह में 59 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी का स्वागत करते हुए पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर टी महापात्रा। I extend a warm welcome to each one of you to the first Global Symposium on Farmers' Rights. Farmers are the custodians of biodiversity, particularly the genetic resources for food and agriculture. It is thus essential that their right to seeds is protected and they are appropriately recognized. The Government of India, in a proactive manner, enacted the PPVFR Act in 2001 and established the PPVFR Authority to implement the provisions of the Act. It is therefore most appropriate that India is hosting this symposium and honoring the plant genome saviors with awards and honors today. We are highly fortunate to have the Honorable President of India to grace this occasion as the chief guest. We are highly inspired by your very presence in this conference and express our sincere gratitude to you, ma'am, for your gracious presence. We have with us Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare. Sir, I welcome you and thank you very much for your kind presence to preside over the inaugural session. I welcome Sri Kailash Chaudhary ji, who always talks about the farmers and takes keen interest to solve their problems. Sir, I thank you very much for being here in this particular program. Sri Manoj Ahuja has been a pillar of support and encouragement. Dr. Puroda has been a keen observer of all that which is happening with regard to farmers and their activities. Dr. Pathak and his dedicated team have provided all the possible support along with this venue. Dr. Hagewara, FAO India office, Dr. Kent, Secretary, ITPGRFA, have been at the core of organizing this particular symposium. I wholeheartedly thank all of you and welcome each one of you to this इंटरनेशनल प्रोग्राम। जय भारत। इस अवसर पर ग्लोबल सिंपोजियम के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए श्री मनोज आहूजा, सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। The ITPGRFA, which is also known as the Plant Treaty, is a legally binding international agreement which was adopted in 2001 under the auspices of the Food and Agricultural Organizations of the United Nations. The primary aim of the treaty is to ensure conservation and sustainable use of plant genetic resources for food and agriculture, and to promote fair and equitable sharing of benefits derived from their use. A critical component of the treaty is the recognition and protection of farmers' rights. And it is with great pride I say that India has been the first country in the world to include farmers' rights in the context of plant variety registration through its PPVFR Act 2001. The Global Symposium on Farmers' Rights, to be hosted from 12th to 15th September, is organized by the International Treaty on Plant Genetics Resources for Food and Agriculture. It's a significant international event hosted by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, through Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authorities in partnership with ICAR, IARI and NBPGR. This symposium represents a crucial gathering of stakeholders around the world to discuss and deliberate upon the preservation and promotion of farmers' rights in the context of agricultural biodiversity, farmers' rights and food security. Jai Hind. ग्लोबल किसान अधिकार सिंपोजियम में सभी को संबोधित करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आप सभी का इस वैश्विक संगोष्ठी में भारत सरकार और केंद्रीय किसान मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। विविध पौधों की किस्मों जो न केवल हमें जीवित रखती हैं बल्कि पर्यावरण को भी समृद्ध करती हैं। कृषि जैव विविधता संरक्षण सिर्फ कर्तव्य नहीं
वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए एक महती आवश्यकता है और भारत सरकार इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सदस्य देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित हैं। भारतीय संसद द्वारा पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में अधिनियमित राष्ट्रीय कानून से बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित है। इस कानून का अधिनियमन के बाद से भारत सरकार ने कानून में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। भारत के पौधा किस्म संरक्षण ढांचे की विशेषताओं में से एक इसका किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अधिनियम किसानों की पीढ़ियों के अनवरत प्रयासों से पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण व विकास में किसानों की अमूल्य भूमिका को मान्यता देता है। यह एक्ट किसानों के खेत में बचाए गए बीजों को बचाने, उपयोग करने, आपस में बांटने, साझा करने और बेचने का भी अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान किसानों को स्थानीय ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए उनकी स्वायत्तता संरक्षित करते हुए कृषि मूल्य श्रृंखला में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार देता है। भारत की समृद्ध कृषि विरासत हमारे किसानों के प्रयासों के कारण फली फूली है, जिन्होंने सावधानी पूर्वक कई पौधों की किस्मों का पोषण और विकास किया है। पौधों की ये किस्में न केवल जीविका का स्रोत हैं, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के बीच गहरे संबंध का जीवंत प्रमाण है। पौधों की विविधता के संरक्षण में हुई सकारात्मक प्रगति के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। पौधा किस्म अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना विशेष रूप से पारंपरिक और स्वदेशी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता अभियान व क्षमता निर्माण की पहल किसानों के प्रजनकों के बीच उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में समझ बढ़ा सकते हैं। पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है जो खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि की भावना को परिपूर्ण करता है। यह राष्ट्रीय अपेक्षा के अनुसार प्रजनकों एवं किसानों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाता है। 2005 में स्थापना के बाद से ही प्राधिकरण के पौधों के किस्मों को पंजीकृत करने, हितधारकों को आपस में जोड़ने, बीज क्षेत्र में नई विधा को प्रोत्साहित करने, पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण करने और प्रजनकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय जीन कोष की स्थापना की गई है। किसानों समुदायों के योगदान को स्वीकारने के लिए पुरस्कार देने की व्यवस्था भी की गई है। मुझे उम्मीद है इस वैश्विक संगोष्ठी के माध्यम से इन सब विषयों पर विचार विमर्श होगा। साथ ही कार्य योजना, पारंपरिक कृषि जैव विविधता संरक्षण और फसलों के इन पारंपरिक किस्मों पर दुनिया भर के किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के पोषित लक्ष्य की ओर निष्कर्ष निकलेंगे। मैं इस अवसर पर इस वैश्विक संगोष्ठी की शानदार सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा 26 किसानों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ग्लोबल किसान अधिकार सिंपोजियम के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्बोधन में कहा, It gives me immense pleasure to attend this august gathering for the Global Symposium on Farmers' Rights, which is taking up the issues closest to my heart. Since my childhood, I have been taught to live in harmony with nature. The wide range of biodiversity, wildlife, and varieties of exotic plants and creatures have always enriched our lives and made this planet beautiful. In this context, I say with conviction that our farmers since the beginning of civilization are the real engineers and scientists. They have harnessed the energy and bounties of nature for the benefit of humanity. A Nobel laureate and economist, while visiting a village in Bihar, once remarked, Indian farmers are better than scientists. I entirely agree with this statement, as in agriculture, we have seamlessly blended tradition with technology. As you all know,
agriculture is the first vocation known to humankind, and it thrived on agrobiodiversity that Mother Nature has given us. The farming fraternity of the world is its foremost conserver. You are the true guardians of crop diversity. Though I know that we have lost many plants and species, we all must appreciate your endeavor to protect and revive many varieties of plants and species whose existence is crucial to all of us. Dear delegates, I am happy that the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture has chosen India as the venue of the first global symposium of farmers' rights, and appropriately so, as India is an ancient civilization where our traditions, culture, and agriculture are part of the same fabric. This is the land which has internationalized since ages the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, meaning that the entire world is one family. I welcome all of you to this sacred land which has abiding faith in well-being of every culture of the nature. Our ancient scriptures guide us with widely benevolent teachings of Sarve Bhavantu Sukhino, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Paschantu, Ma Kasit Dukho Bhagya Bhavet. It means may all be prosperous and happy, may all be free from illness, may all see what is spiritually uplifting, and may no one suffer. According to the International Union for Conservation of Nature, India is a mega diverse country with only 2.4% of the world's land area, but accounts for 7-8% of all recorded species of plants and animals. There are about 45,000 species of plants, which is about 7% of world's total. Our farmers have toiled and enterprisingly conjured local varieties and plants. Domesticated wild plants and nurtured traditional varieties that have provided the building blocks for different crop breeding programs. This has ensured the food and nutritional security for human beings and animals. The area-specific varieties of crops are closely associated with society and culture and often contain medicinal properties. Agricultural research and technology development has enabled the country to multiply product of food grains, horticulture, fisheries, milk, and eggs many times since 1950-51, thus making a visible impact on the national food and nutrition security. The efforts of our agrobiodiversity conservers and industrious farmers, scientists, and policymakers, coupled with governmental support, have played a key role in giving fillip to multiple agricultural revolutions in the country. All of them are worthy of our unreserved praise and respect for achieving this incredible feat. This is important as in the raging debate of food sovereignty versus food security. I firmly believe that the technology and science can serve as an effective protector and enhancer of heritage knowledge. हम भारत में किसानों को अन्नदाता कहते हैं। जय हिंद, जय किसान। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा पादप प्राधिकरण भवन का उद्घाटन और पादप किस्म रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल का भी लॉन्च किया गया। इसी के साथ ही किसानों के अधिकारों के लिए ग्लोबल सिंपोजियम और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार वितरण समारोह के उद्घाटन समारोह पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। स्वर निशा भारद्वाज, सहयोग तकनीकी टीम, प्रस्तुतकर्ता प्रियंका कुमारी और शिवनंदन लाल। अभी आप सुन रहे थे खाद्य एवं कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत किसानों के अधिकारों के लिए ग्लोबल सिंपोजियम और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार वितरण समारोह पर रेडियो रिपोर्ट।